Hello learners, welcome back to the channel Economics at Ease. I'm Nida, your educator. और हमने demand chapter complete कर लिया. Today we are going to start a new chapter, that is elasticity of demand. Okay, elasticity of demand is chapter number 4 according to the book index. Okay, and if this helped you understand better, then don't forget to subscribe for more easy explanation. Okay, so I'm going to start the elasticity of demand, right? So let's start here. Okay, so basically here the concept of elasticity of demand. Elasticity of demand होता क्या है? पहले हमने law of demand पढ़ा था. Let me just explain you here this thing. Just wait. I think there's some. Yes, right. So okay. Okay. So let's start here. पहले मैं आपको revise करा दूं. What was the law of demand? Okay. So the law of demand, what we understand, okay, in the previous chapter. That is, as the price increases, demand falls, and as the price decreases, demand increases. So this is known as the inverse relationship, right? So this was the whole chapter that we have studied in chapter 3, that is demand. Okay, तो inverse relationship का मतलब क्या? जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, और प्राइस जो है आपका कम हो जाएगा तो डिमांड बढ़ जाएगी. दैट मीन्स एरोज आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन. सिंपल मैं आपको समझाया था, राइट? सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है, लेकिन यहाँ पे ये बताते नहीं. इनवर्स रिलेशनशिप तो बता दिया इन्होंने, बट दे डू नॉट टेल यू अबाउट हाउ मच द चेंज विल बी देयर. कितना चेंज हो रहा है? अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कितनी कम हो रही, कितना हो सकता है? हाउ मच चेंज इन डिमांड विद रिस्पेक्ट टू प्राइस. तो ये क्या होता है, यहाँ पे ये बताते नहीं है हाउ मच चेंज इन डिमांड विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, राइट? ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे सॉल्व नहीं होता लॉ ऑफ डिमांड में. सो इन ऑर्डर टू गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वी नीड टू स्टडी द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. गॉट इट? हियर इसका रीजन क्या है? ये हमें बताता है दैट इज कि आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मींस हाउ मच चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू अ चेंज इन इट्स प्राइस. कितना जो है आपका चेंज होगा क्वांटिटी डिमांडेड में अगर आपका प्राइस चेंज होता है, कितना होता है चेंज, वो हम इसको पढ़ेंगे इस चैप्टर में. ओके, सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. नाउ आई एम गोइंग टू जस्ट टेल यू हियर सम मोर थिंग. It was first, you can say, developed by Professor Marshall, right? Who in the book of Principles of Economics. Okay, so this was the whole introduction. और हाँ, elasticity of demand को हम ये elasticity of demand है, इसको हम डिनोट करते हैं ED से. ओके, ED ऐसे भी लिख सकते हो, और यू मे राइट लाइक दिस. ई कैपिटल ई एंड डी स्मॉल. ओके, तो हमेशा इसको जब आप न्यूमेरिकल्स में करेंगे या अभी आगे आप क्वेश्चंस करेंगे तो ईडी आप ऐसे लिखेंगे. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ये फॉर्मूला होता है. ओके, द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. डिमांड फॉर कमोडिटी इज अफेक्टेड बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स. तो नंबर ऑफ फैक्टर्स आपके कौन से होते हैं? चेंज इन इनकम है, आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, टेस्ट एंड वेदर है. ये सब हमने पढ़ा था ना पिछले क्लास में. सच एज अ चेंज इन इट्स ओन प्राइस. ओके, so demand for a commodity is affected by number of factors such as the change in its own price. अपने ही commodity के price जो change होता है उससे भी affected होता है. A change in the income of the consumer, a change in the price of related goods. ये मैंने आपको example बताया. Elasticity of demand, यहाँ पे ये क्या है आपका definition है. Okay, whenever it is being asked, you have to write the full definition and with this formula also. Please do write the formula also. Okay, elasticity of demand refers to the percentage change in demand. परसेंटेज चेंज इन डिमांड, देखो एग्जाम्पल में भी वैसे ही आ रहा है, ठीक है ना, जो फॉर्मूला आपका है फॉर कमोडिटी विद रिस्पेक्ट टू द परसेंटेज चेंज इन
any of the factors affecting demand for that commodity. So percentage change in factors. ओके यहाँ पे चेंज इन प्राइस आ जाएगा बाद में, ठीक है. सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज व्हाट, दैट इज द refers to the percentage change in quantity demanded for a commodity with respect to the percentage change in any of the factors affecting demand for that commodity. Elasticity of demand can be calculated as, अब इसका ये फॉर्मूला है, elasticity of demand हम लिखेंगे equals to percentage change in demand for x, x is that any commodity, and percentage change in the factors affecting the demand for x. Okay, उसके फैक्टर्स जो इफेक्ट कर रहे हैं. देन आउट ऑफ द वेरियस डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड देयर आर थ्री क्वांटिफाइबल डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. तो अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या हो सकते हैं, तीन तरह की हमारी इलास्टिसिटीज हो सकती हैं. एक होता है प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड, एक होता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, and the first one is the price of the given good. Okay, so there are some few more elasticity of demand, but in our course we are going to study only the first one, that is the price of the given commodity. जब भी हमारी इलास्टिसिटी क्या होती है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड refers to the percentage change in price. ओके, जब हम जो है इसको खाली खुद के प्राइस से कंपेयर करते हैं, परसेंटेज ऑफ change in demand for a commodity with the respect to the percentage change in the price of the given commodity, right? So it is known as the price elasticity of demand. Similarly, cross demand क्या होता है, cross demand is again, cross elasticity of demand refers to the percentage change in demand for a commodity with respect to percentage change in the price of a related good. Okay, तो क्रॉस डिमांड का मतलब क्या होता है, आपके गुड्स कौन से आते हैं, यहाँ पे आपके आते हैं that is substitute goods and complementary goods. Now you just tell me in the comment section example of substitute good and complementary good. I hope ये सबको याद होगा कि आपने प्रीवियस क्लास में हमने डिमांड में पढ़ा था क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. ओके, प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन डिड यू रिमेंबर और नॉट. ओके, नाउ द क्रॉस इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या होता है, सिंपली रिफर्स टू द परसेंटेज इन द डिमांड फॉर कमोडिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स. ओके, देन इनकम इलास्टिसिटी डिमांड का मतलब आपकी कितनी डिमांड में, क्वांटिटी डिमांड में चेंज आता है विद द चेंज इन इनकम. ठीक है, income elasticity of demand refers to the percentage change in demand for a commodity with respect to percentage change in the income of the consumer, but we are going to study only price elasticity of demand, right? Now price elasticity of demand का मतलब क्या होता है, price elasticity of demand means the degree of responsiveness. okay, ये क्या है, डिग्री है आपकी responsiveness की of demand for a commodity with the reference to change in the price of such commodity. In simple language, elasticity of demand means the degree of change in quantity demanded. Responsiveness means degree of change in quantity demanded with the change in its price. अपने खुद के प्राइस अगर वो चेंज होता है तो उसकी क्वांटिटी कितनी चेंज करती है. ओके, नाउ सम important point that we have to understand here, it establishes a quantitative relationship between quantity demanded of a commodity and its price while other factors remains constant. यानी कि क्वांटिटी कितनी डिमांड आप करेंगे जब उसके खुद का प्राइस चेंज होगा. ओके, एंड कीपिंग द अदर फैक्टर्स कांस्टेंट. सो हियर द अदर फैक्टर्स मींस व्हाट, अगेन अदर फैक्टर्स क्या होगा, इनकम, टेस्ट, related goods, price of the related goods, population, technology, so many things. Okay, then second में क्या बोल रहे हैं, second में ये कह रहे हैं the higher the numerical value of elasticity, the larger is the effect of a price change on the quantity demanded. It means if the numerical value of elasticity, जो भी आपका आंसर आएगा elasticity जब भी हम कैलकुलेट करना सिखाएंगे आपको, तो उसमें क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इलास्टिसिटी ऑफ इसका आंसर आया 2 और 3, इट मींस पीपल रिएक्ट स्ट्रांगली टू प्राइस चेंजेस. ओके, एंड अ स्मॉल चेंज इन प्राइस, अगर आप थोड़ा सा चेंज कर देंगे प्राइस में, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, सो इट विल कॉज अ बिग चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड. ओके, so if the numerical value of elasticity is high like 2 or 3, then what happens, it means people react strongly to price changes. A small change in price will cause a big change in the quantity demanded. लेकिन छोटा सा भी चेंज होगा तो वो बड़ा आपका चेंज कर देगा क्वांटिटी डिमांडेड में. ओके, देन द थर्ड पॉइंट इज दिस, फॉर सर्टेन गुड्स अ चेंज इन प्राइस लीड्स टू अ
greater change in demand, whereas in some cases there is a small change in demand due to change in price. तो इसका मतलब क्या है कि some goods are very high elastic. Okay, for example, अगर luxurious goods हैं या non essential goods हैं जिनको आप जरूरत इतनी नहीं है, people quickly reduce or increase their purchases when price changes. Okay, other goods have low elasticity. For example, अगर आपकी necessities हैं जैसे कि salt है, medicine है, आप उसको postpone नहीं कर सकते. People buy almost the same amount even if the price changes. Okay, so this was the explanation here. Okay, and I'll just try to, in the next video, I'll just mention how we are going to calculate, okay, this elasticity of demand with the methods given in the book. That is the proportionate method and percentage method. Okay, and keep learning, keep growing. Okay, and thank you so much.